Then we'll start. Good enough. So how's Swati today? Well? No, ma'am. Still suffering? Yes, ma'am. Okay, okay. Take care, take care. Chaliye ji. I'll share my screen. I'll share my file with you so that we can start doing our work. So many files I've already opened for you. Let us open the correct one. Yeah. I hope you are able to see. Yes, ma'am. Yes? Yes, Okay, ma'am. fine. So today, like earlier, we have already taken about the languages of computer. इसमें मुझे ऐसे लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा और language के नाम सारे ठीक से बता दूं, so that it will help you to just recall कि कौन-कौन से languages होते हैं, and plus also the things. 1 minute. Yeah, and also the inventors, like किसने कौन सी language बनाई है, the names I wanted to give you all. So we'll just cover a small topic and then we'll move on to discussion of MCQs. So let's start with high level language, which is known as HLL. It's a programming language that enables a programmer to write programs independently. Such languages are closer to the human language. High level languages are simple language that use English and mathematical symbols, such as you can see plus, minus, percentage, slash for its programming construction. Example, कौन-कौन से languages होते हैं? Basic is there, C is there, C++ is there, COBOL, Fortran, Algol, Pascal, Prolog. ये different types of languages हैं जो computer के software बनाने में, जो programming run करने में use किए जाते हैं. Basically it is a beginner's all-purpose symbolic instruction code. आपके लिए ये important होता है जानना कि what is the full form of that particular language, who has designed that language. These are the key points to remember about every language. Was developed for the students to write simpler computer programs, and it was designed by John Kemeny and Thomas Coates in 1963. Then came Algol. Algol is a short form of algorithm. Algorithm language. It is a family of portable programming languages for scientific computations. Then we have Prolog. Prolog is widely used for artificial intelligence applications, particularly in the expert systems. Then we have Pascal. Pascal, it is used to teach programming techniques. It was developed by Nicholas Wirth. इसका एक table बनाया हुआ है मैंने नीचे. So no need to worry. How will you remember that? Fortran. Fortran, it's a programming language designed for numeric computation and for scientific computing. Then we have a formula translation, जिससे आता है Fortran. Formula translation, the acronym of Fortran. Then we have COBOL. COBOL was first language. Common Business Oriented Language is the full form for COBOL. COBOL. It is used for business and administrative purposes. It can be read like a regular English language. Then came C. It is a general purpose language which is used in many scientific programming situations. Then we have advanced version of C, came as C++. It's an object-oriented program language and incorporates all the features offered by C. क्योंकि उसी का वो advanced वाला part है. What are the advantages? क्यों इतनी सारी machine की languages होती हैं? Independent of machines can run on any computer. Problem oriented rather than machine oriented. हर program के solution के लिए एक particular language लिखी जाती है, उसी के लिए वो उसका use होता है. And these languages are user friendly, means it is easy to understand. What are the disadvantages? किसी चीज के अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं. Disadvantages: need time for translating. Object oriented programming की जाती है ये. Now what is object oriented programming? Is a software programming model built around objects. This model classifies data into objects and describes object content and performs through the declaration of the classes. Then we have a Simula. It is the first object-oriented programming language. The example of object-oriented programming language are, आपने सुना होगा Java, Python, JavaScript, C++, C#, PHP, Perl, Ruby, .NET, Curl, Visual Basic, Smalltalk, Delphi, and Eiffel. These are different types. These are the languages. ये जो हमें Ruby, Perl देखते सिर्फ वो हीरा पन्ना ही नहीं होता है, but ये languages भी है कंप्यूटर की जो particular program के लिए बनाई जाती है.
Java is used for developing mobile, desktop, web, server-side and dynamic web applications. JavaScript is designed for studying HTML pages, जो कि वेबसाइट बनाने में काम आती है. Interactive to HTML pages, server-side scripting operation, executing query related to DB on server. Then we have Python. Python is general purpose programming language. It is used for developing complex scientific, numeric application, data analysis, and visualization. Then we have C hash. C hash is a general purpose language, was designed by Microsoft to be used for developing apps on the Microsoft platform. जो different application हम लोग install करते हैं Microsoft Windows में, उसको use करने के लिए C hash जैसी language बनाई गई है. Then we have PHP. PHP stands for Hypertext Preprocessor. It is a scripting language used for the development of web application. .NET. .NET is a programming framework developed by Microsoft, which can be used to build different types of applications such as Windows, web application, mobile-based application, etc. Then we have a Visual Basic. It's an approachable language with a simple syntax for building type-safe, object-oriented apps. अब ये देखिए, this is a table which is of great importance to you. Like these are the various languages and this is the father or the inventor or who has designed that particular language. These are the names given to you. When I share the file, you can just make a note of this. C, C++ was made by Dennis Ritchie. Java by James Gosling. JavaScript, Bredin. H, PHP, Rasmus Lerdof. Python, Guido van Rossum. नाम तो इतने कठिन है कि एक बार में याद ही नहीं होंगे. Then HTML, Tim Berners-Lee. .NET is Microsoft Corporation. C hash, again Microsoft Corporation. Perl was made by Larry Wall. And Ruby, again a computer language which was made by Yukihiro Matsumoto, must be from Japan. Other related terms. एक छोटे छोटे terms है जो बहुत ज़्यादा description में नहीं दे रही हूँ, just to understand the terms. Language processor, what is it? It's a software designed to perform tasks such as processing program code to machine code. Language processors are found in languages such as Fortran and COBOL. Then we have debugger. Debugger कई बार use करते हैं, run करते हैं हम लोग systems के अंदर. Debugger एक software utility program होता है that is designed to locate errors within a program source code. मतलब जब भी एक प्रोग्राम बनता है वो ठीक है कि नहीं, उसमें कोई एरर है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए डिबगर को रन किया जाता है, क्योंकि अगर उसमें कुछ एरर्स होते हैं सो दे कैन इजीली मेक आउट एंड दे कैन डू द रेक्टिफिकेशन देयर एंड देयर. देन द लिंकर. Linker is a program that combines object modules to form an executable program. Then a loader. Loader brings all the program objects into the memory, which is essential to run a program. किसी भी program को run करने के लिए उसको पहले memory में आना पड़ता है, and then only it starts a smooth functioning of it. What do you mean by spooling? Spooling is a process in which data is temporarily held to be used and executed by a device, program, or the system. Data is saved in storage until the program requests it for the execution. मतलब spooling पे डाल दिया, जब भी उसकी जरूरत पड़ती, then the executable file takes that file and start working on it. Now, ये तो रहे छोटे छोटे terms. Yesterday we have done about number systems. I told you about bit binary. सारा पूरा आपको एक टेबल बताया था. आज उसी से elaborate करते हुए थोड़ा सा और उसके बारे में बताती हूँ. And then based on this, few MCQs are also there, because in exams if they give you to identify octal, hexadecimal, binary decimal, how are you going to recognize them? Fine. So number system, it's a technique to represent and work with numbers. The most widely adopted number system is the decimal number system, which has 10 digit. But 10 digits कैसे होते हैं? 1 to 10 नहीं होता, 0 to 9 होता है, जो कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर भी आप देख सकते हैं. Keyboard is also designed in such a way that it contains the alphabets A to Z and it contains the number from 0 to 9. Combination बनाना है तो 0 और 1 का लेकर के combination बनता है. But all are designed in such a way. Then binary number system, 0, 1, binary. Oct means there should be 8. Octa means 8. But कहाँ से start होगा? 0 से start होगा. 0 to 7 count करेंगे तो 8 numbers होंगे. Similarly, hexadecimal जब number system हम देखते हैं, शुरुआत के 0 to 9 numbers they take, and afterwards they take remaining alphabets. मतलब पहले तो 10 ले लिए numbers and then A to G तक के alphabets वो ले लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are the other number systems. Now we'll come here. The number, this is a small table
जस्ट इसको समझिएगा, बिकॉज रिलेटेड टू दिस आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द वेबसाइट्स एंड ऑल ना, तो वहां पे आई फाउंड कि देयर आर क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क फ्रॉम दिस conversion also, like how do you convert the decimal to binary and from binary to octal, इस तरह के conversions के questions भी होते हैं. So just go through it once, it's very easy to understand. Pay attention. The number of digits in a system is called radix, or it is the base. The base of a decimal, binary, octal, hexadecimal system is 10, 2, 8 and 16 respectively. मतलब decimal का 10 होगा, binary का 2 होगा, octal का 8 होगा, hexa का 16 होगा. Now this अगर decimal में 0 है तो binary में कैसे लिखेंगे? 0 0 0 0. Octal में only 0, hexadecimal में 0. Similarly, if I say decimal 3, then binary it will be written as 0 0 1 1. In octal it will be written as 3 and in hexadecimal it will be written as 3. अब अगर आप एक बार खुद से टेबल बनाएंगे ना अपने हाथ से, you will find it easy. There is not much difficulty. You can see here 0 0, नीचे वाले में 1, फिर 1 आपका यहाँ शिफ्ट होता है, अगेन दूसरे में 1, फिर 1 आगे शिफ्ट होता है, 2 0 ऐड होता है. Once you write the table with your pen in your notebook, definitely once you will take a look, second time आप आराम से इस टेबल को अपने कॉपी में आराम से बना लेंगे. And these are just the increasing numbers. 9 तक जाएंगे हेक्साडेसिमल में, उसके आगे ABCD. Then you can see here after 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, like this. इससे related I have given you few questions so that this table is also helpful to you. Let us check that table out, questions out. 1 minute. Binary. Seen? Stop तो नहीं हुआ है screen? दिख रहा है? Yes, ma'am. दिख रहा है? ठीक है जी. So first मैंने binary के ही questions लिए because just उसको अभी बताया था. So I am focusing on that binary number system. Which of the following is not a positional number system? Not a positional number system. Explanation भी है साथ में. Yes? A Roman number system. रोमन नंबर, बिकॉज हमने अभी देखा हमारे टेबल में बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्सा है, इसमें से रोमन नहीं होता है. सो रोमन नंबर सिस्टम isn't a positional number system since it uses the symbol to represent numbers. The octal number system uses 0 to 7, binary यूज करता है 0 1, hexa uses 0 to 15. Yes, the value radix, sorry. The value radix in binary system is 2. binary में 2, correct. And if I change the same question, if I give decimal, then Ma'am, 1 0. 1 0. If I give it octal, then Ma'am, 8. and hexa, then इसमें नहीं है option, but what will be the answer? Hexadecimal देती हो तो 16. 16, correct. Very good. Right? So this is how we should know. भले question एक है, but 4 types of different question can be formed from one question. Right. The binary equivalent. Now look at this question. इसका एक explanation भी साथ में आपको दिखाती हूँ, so that it is easy for you to understand. The binary equivalent of the decimal number 10 is. सिर्फ देख करके हम नहीं बता पाते हैं, तो हम solve भी कर सकते हैं. इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ. 1010 है. कैसे आया देखिए यहाँ पे. Here you can see 10 divided by 2, remaining is 5 there. 5, 2 5s are 10, remainder is 0. Then same 5 divided by 2, the remainder is 1. 2 divided by 2 means 2 1s are 2, then remainder is 0. And again 1 divided by 2, 0 बचेगा, remainder will be 1. And they count reverse. When we write the remainder in the reverse order, कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0. तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C. Like this you can also do the calculation by your end. बहुत ज्यादा चीजें रटने की भी जरूरत नहीं होती है. You can understand the concept and you can solve it by yourself also. A computer language that is written in binary codes only is machine language, C, C hash या Pascal? Machine language. Machine language? Yes, Binary ma'am. codes. Binary codes. सामने दिख रहा है आपको आंसर, बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली. It can be easily understood by the computer and it is very difficult for us to understand. A machine language, unlike other language, requires no translator and no interpreters. Fine. अब जैसे अभी हमने ऊपर बाइनरी का देखा. Now this is the octal equivalent of.
ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 1 1 0 0 1 0 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा आंसर है? लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली. Instead of testing you all, I should give you the explanation. Fine. This is your number. This is your number 110. थोड़ा पॉइंट से उसको सेपरेट करिए, लेफ्ट एंड राइट एंड बीच में पॉइंट. सो सेपरेट देम. फुल नंबर हैज बीन रिटन. एंड इसको कैसे निकालते हैं? देयर इज वन मोर. अभी जो फाइल हमने ओपन की थी उसको भी ओपन करते हैं. आई विल शो यू. जस्ट गिव मी अ मिनट. बोथ द फाइल्स साइड बाय साइड आई कैन टेक so that it is easy for you. 1 minute. It is overlapping. ये देखिए, ये आपका टेबल था और ये आपका क्वेश्चन है. या विल जस्ट सी द टेबल वंस. यहाँ पे देखेंगे. हाँ जी, देखिए 0 0 1 बाइनरी में 0 0 1 0 0 1. ये दिख रहा है आपको 0 0 1. ऑक्टल में उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? 1. So you can directly write here 1. In 0 1 0 0 1 0, this part. In octal it is written 2. So you can write directly 2 here. Similarly हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं 1 0 1. So 1 0 1. What is coming here in octal? 5. You can directly write there 5. 1 0 0. You can see here 1 0 0. And what is there in octal? It is 4. So we have directly written here 4. For binary 1. Binary 1. What is the octal? 1. So हमने यहाँ पे लिखा 1. So this will be your octal representation of 1 1 0. Sorry, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 का आंसर होगा आपका 145.12. Right? Is it clear? Any doubts in this? So you can use this table and you can get the clarification. 1 minute, let me enlarge my file. Yeah. Then similarly, in hexadecimal number system, now same उसी concept पे जो अभी हमने table देखा था, 1110 is equal to 15, which is represented by the alphabet E. Sorry, question की जगह मैंने answer explain कर दिया. I'll skip on that part. A bit in computer terminology means either 0 or 1. True or false? Answer is, am I out of the class or what? Smriti? No, ma'am. I am there ना. You are also there ना. मतलब मैं दीवारों से तो बात नहीं कर रही हूँ ना. नहीं, ma'am. हाँ ना का एहसास दिया करो, नहीं तो ऐसे लगेगा कि I am talking alone, I become mad. है ना, थोड़ा सा एहसास दिलाया करो कि टीचर you are also there, we are also there. Yeah. So what is the answer over here? A bit in a computer terminology means either 0 or 1. Answer सामने है आप लोगों के. I'm true. True. A bit stands for a binary digit. We all know, and it is represented by 0 and 1. अब मैं explanation नहीं दिखाती हूँ, बिना उसके दिखाए कुछ नहीं. Convert the binary equivalent 10101 to the decimal equivalent. Time लगेगा करने में. अभी table नहीं पता है. You all know this table? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, no problem. Then with that help of that table, you try to solve this kind of questions. When I send you na, directly answer रटने के बजाय, you try to solve and get the answer from that table itself. Okay, write that table twice at least today when you get the file. Here same, देखिए कैसे किया हुआ इसको, binary equivalent को decimal में कैसे convert किया है. To convert binary equivalent to the decimal equivalent, follow these steps. ये कितने हैं, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5. 5 नंबर है. 1 के बाद में 4 नंबर आ रहे हैं, मतलब ये 1 है. 1 के बाद यहाँ पे और 4 डिजिट्स आ रहे हैं. सो हम किससे स्टार्ट करते हैं? इसका हमेशा बेस 2 होता है. सो 2 to the power of 4 इंटू पहला नंबर है 1 प्लस 2 to the power of 3 इंटू 0, देन 2 to the power of 2 इंटू 1, फिर प्लस, फिर देखिए 2 to the power of 1 इंटू 0, फिर प्लस आपका सॉरी 2 to the power of 0 इंटू 1. ये आएगा आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 to the power of 4, 2 to the 4 4 6. इस तरह जब हम सॉल्व करके निकालते हैं तब आंसर आपका निकलेगा 21. ये अगर आपको लिखना आ गया तो इट्स इजी फॉर यू टू
convert it into 21. Now, which of the following is not a binary number? Option C. 118. It is clearly seen because why option C? अगर हम explanation नहीं देखते हैं तो क्यों है option C? बाइनरी में 0 और बाइनरी 1 में होता है, 0 और इसलिए 1 होता है। अल्फाबेट है। बिल्कुल सही। बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं 0 and 1 और इसमें हमने एक अल्फाबेट ऐड कर दिया है E. That is why this is not the answer. Then, which of the following is the correct representation of a binary number? Try. Option B. Option B. Option B. Primary number should comprise only 2 digits, 0 and 1. Also for the base, the value should be 2. है ना? तो आंसर है D, इसमें 002 दिया हुआ है, बेस वैल्यू के हिसाब से दिया हुआ है ये वाला। चलिए लैंग्वेज के ऊपर, जो अभी हमने लैंग्वेजेस की बात की, few questions based on that. What language does a browser use to display information from the www? What language? HTML. HTML. यहाँ पे लिखा है HTML is a language a browser typically interpret to display. Okay. A program is a sequence of dash written in programming language. Instruction. Instructions. Yes, it is the instruction given to the language. पहले ही दिख जाता है आप लोगों को आंसर, मैं नहीं चाहती थी दिखे. Which language is better for writing structured code? Pascal. Pascal. See the explanation here. Pascal is more suited to a structured program. Then a computer software that transform assembly language to a machine language is known as compiler, interpreter, assembler या कुछ भी नहीं. Ma'am, second. Assembler. Interpreter, compiler या interpreter या assembler क्या है? Interpreter. इंटरप्रेटर चेक कर लेते हैं. असेंबलर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, दैट इज असेंबलर. नंबर 3, कंपाइलर एक कंपाइल करने में यूज होता है. देन एक्सप्लेन, यहाँ पे देखिए 5th क्वेश्चन. 1 minute. Too high I came. The symbols used in assembly languages are, what are they called? Codes, mnemonics या assembler. What do we call them? Symbols in the assembly language. Assembler. Assembler. Let's check it out. All. They are called mnemonics. Mnemonics. Okay. हर समय थोड़ी ना वर्ड टू वर्ड प्ले खेलेंगे हम लोग. Yes. The which is non-standard variant of a programming language. Non-standard variant of a programming language. Army. Marni. Good. The answer is Army. Army. Army is a non-standard version of a computing language. Very good. A language which is close to that used with the computer is high level, assembly, low level, all of above. I'm all of the above. All of the above. और कोई try करेगा? Language which is close to that used. Low level language. Which one? Which option? 3, 7 का 3. Okay. It is low level language. Absolutely right. Number 3, low level language. Okay. What is the high level language limitation? None of the above. None of above. Lower efficiency in case. What is the high level language limitations? Lower efficiency. Then which is referred to as a low level language? किसको बोलते हैं हम लोग low level language? Machine language, assembly language या both? Low level language. Right? None of the above. None of the above? Both of the above. Low level language, machine language भी low level होती है और assembly language भी low level होती है.
1 minute. Huh? Down. Programming language, which is extension of programming language, basic is. Yes, Neeru, trying to give. Pascal, COBOL, Logo, Command. Ma'am, Pascal. Pascal है, थोड़ा और ट्राई करेंगे कोई? Ma'am, The answer COBOL. here is number 4. The programming language, which is extension of programming language, basic is COMAL. COMAL. थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही हूँ अब. हाँ, ये वाली फाइल का तो हो गया है. I have another file for you. 1 minute. Let me close this file. Yes. Again, you are able to see. मैं close करती हूँ, open करती हूँ, तो you are able to see ना. Disturbance तो नहीं हो रहा इसमें? No, ma'am. Okay, fine. Because I have opened all the files today just to save time. So whatever files I have prepared. These are some questions based on types of computer. The topics which we have already covered lastly. उन topics के ऊपर some few questions I made it. Which of the Supercomputer. pardon? Supercomputer. Super Java. मतलब मुझे बोलने भी नहीं दिया. What is following is not a type of computer based on size. Laptop computer. Not based on size. Supercomputer बहुत large होता है. Which type of computer is typically used for scientific and engineering application? Supercomputer. Supercomputer, engineering applications के लिए, right? Then which type of computer is designed to be used by a single person and is commonly found in homes and offices? Micro. Microcomputer? Yes, ma'am. Microcomputer. Who's Siddharth is joining now? Siddharth, so late you are joining? Which type of computer is specially designed to serve multi-users and handle large amount of data and processing? Workstation. Workstation computer? Yes, ma'am. Mainframe computer. So multi-users. बहुत सारे यूजर एक ही साथ में बहुत सारे वहां पर बैठ काम कर सकते हैं. Which type of computer is portable, lightweight, designed for using while traveling? It's very easy. Laptop. हाँ, Yes. laptop computer. Laptop, which is very easy to carry anywhere, wherever we want to go. Which type of computer is typically used to host websites, store data, provide services to other computers over a network? Server computer. Exactly, because तभी जाकर के वो हम लोग वो वेबसाइट अवेलेबल करवा सकते हैं. सर्वर कंप्यूटर. Very good. Then, which type of computer is known for its exceptional processing speed and is used for complex calculations and simulations? Tablet computer. Which one? Tablet. Tablet है for exceptional processing. Supercomputer, Supercomputer. exceptional processing, superpower, exceptional processing and speed. Okay. Then, which type of computer is small, handheld device with a touch screen and is primarily used for browsing the internet, reading ebook? Tablet computer. Tablet होगा. This is handy, जो हम लोग आजकल टैब्स घर पे यूज करते हैं. Handy one. Now some questions based on storage devices. Okay. Which of the following is a volatile storage device? Random access memory. Exactly, very good. Random access memory. और non-volatile का अगर example देना हो तो? ROM. 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 Read-only What is that? memory. Read-only memory. Very good. Which storage device provides the fastest data access? USB. USB, fastest data access? It is SSD. Then which storage device? 1 minute. Huh? This storage device is commonly used for long-term data backup. Ma'am, USB. Ma'am, Blu-ray. USB flash drive नहीं होगा, magnetic tape होगा. ठीक है, storage device commonly used for long term. USB पता है
पेन ड्राइव इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, मेनी टाइम्स इट गेट करप्टेड. आप सेव करके ले जाते हो और कुछ दिन बाद ही इट इज नो यूज, इट गेट्स करप्टेड ऑल्सो. सो इट इज नॉट यूज फॉर द लॉन्ग टर्म डेटा बैकअप. हमें लगता है कि हमने बैकअप लिया हुआ है 32 GB की, 64 GB की, वी हैव परचेज एंड वी आर डूइंग ऑल बैकअप्स ऑफ फाइल्स इन आवर पेन ड्राइव्स, आवर USB ड्राइव्स. बट आफ्टर फ्यू डेज ऑल्सो इट मे गेट करप्टेड, या कहीं उन्होंने आपने कंप्यूटर में इंसर्ट किया, वायरस ने अटैक किया, योर पेन ड्राइव में get destroyed also, right? So here is magnetic tape. Then which of the following storage devices has the highest storage capacity? Highest. Hard disk. Hard disk. It is has to be hard disk. हार्ड डिस्क आजकल पता है ना एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल. पहले जब कंप्यूटर्स बने हुए थे दैट टाइम वी ओनली हैड इंटरनल हार्ड डिस्क, बट दीज डेज व्हेन पीपल हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू बी सेव्ड एंड कीप, हमारे घर में हम बैकअप करके रख सकते हैं. यू कैन इवन हैव एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा करके पूरा डेटा का बैकअप भी लेकर के स्टोर करके रख सकते हैं. Which storage devices uses magnetic field to store data? Magnetic tape. Magnetic tape. Now this is a word play. Magnetic data, magnetic tape. Yes. Which storage device is not affected by a mechanical failure or shocks? कौन सी चीज खराब नहीं होती है? Is not affected by a mechanical failure. DVD. DVD है? नहीं, सोचो एक बार. Floppy. यहाँ सॉलिड स्टेट SSD, क्योंकि हार्ड डिस्क भी खराब हो जाती है कंप्यूटर की, डीवीडी तो बहुत जल्दी खराब होती है, और फ्लॉपी डिस्क तो पड़े पड़े भी करप्ट हो जाती है. तो फ्लॉपी डिस्क यू हैव केप्ट एट होम, जो बिग साइज की, स्मॉल साइज की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, इफ यू कीप दैट लॉन्गर ऑन द डेस्कटॉप और समवेयर लाइंग ऑन द टेबल, कई बार डस्ट लग जाता है, उसके वजह से भी वो खराब हो जाती है फ्लॉपी डिस्क, सो इजीली दे गेट करप्टेड. Which storage device offers the lowest cost per gigabyte of storage? मैम ऑप्शन नहीं दिख रहे सारे. Option सॉरी मैम. HDD. HDD. Yes, right. Which storage device is commonly used for portable storage due to its small size? B. B. That means you are saying USB flash drive. Correct. B. Small. बिल्कुल छोटे साइज. आजकल तो इतने छोटे छोटे साइजेस में भी आने लग गए. Earlier it was big ones. Now, which storage device uses laser technology to read and write data? Blu-ray disc. Blu-ray. Blu-ray disc. Yes. You can understand laser technology से आपको समझ में आता है कि वो Blu-ray है. Minute. When you are preparing for your exams, na, it's good आप लोग prepare कर रहे हो, you will be focusing on the difficult questions also. Plus, don't forget कि आप लोग easy questions को जरूर से solve करके जाएं, because कई बार होता है ना हम easy को ignore कर देते हैं, easy को एकदम ignore करते हैं और हम difficult याद करते हैं. First clear all your easiest part and then switch over yourself to the difficult part of the computer, because computer is vast. कोई भी उसमें mastery नहीं कर सकता है. Fine, if you will ask me questions, I will be also unable to answer many of them, because I can never say that I am a master of computer, never. क्योंकि वो इतनी सारी चीजें उसमें upgrade होती हैं and it's difficult for every person to get updated on a daily basis. So when you are preparing, make sure you all cover the easier part first. Which storage device is typically used as a primary storage in computers? ROM. CD-ROM. It is CD-ROM नहीं, SSD, solid state drive. चलिए आपको और एक फाइल का बताती हूँ. 1 minute. I have prepared for types of computer. ले लिया क्या मैंने? हाँ ले लिया है. I will take this. Computer history. Who is considered father of the computer? Charles Babbage. Everybody is aware. Charles Babbage. आजकल तो स्कूल में भी सिखाया जाता है क्लास 1 के बच्चों को. क्लास 1 में ही ये दे दिया जाता है. Who is the father of computer? Charles Babbage is the father of the computer. The first electronic general purpose computer was ENIAC. ENIAC. How do we call it? ENIAC. 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 Then next, which computer introduced the first personal computer? Microsoft. Microsoft. It's Apple.
ऐप माइक्रोसॉफ्ट बाद में आया था, जब उसने अपना विंडोज वगैरह सब इंस्टॉल किया था 2007 के बाद में। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय Mark Zuckerberg. Zuckerberg. It's Tim Berners-Lee. WWW was invented by Tim Berners-Lee. The first computer mouse was invented by मैम डॉगलस एंड Douglas. Douglas. Yes. And आपको पता है ना कंप्यूटर माउस दो तरह के होते हैं. One is a wireless mouse also. यस मैम ठीक है, एक तो माउस होता है जो वायर के साथ में अटैच होता है, और एक माउस ऐसा भी होता है जो आप कहीं पर भी ले जाते हैं, उसमें एक बटन होता है ऑन ऑफ करने का, उसके थ्रू भी आप माउस यूज कर सकते हैं. इवन कीबोर्ड्स आर आल्सो वायरलेस, दे आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस. देन तो प्लीज स्टडी दैट. माउस वाला पार्ट भी स्टडी करना, कीबोर्ड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखना. इट कंटेन्स 104 कीज. कौन कौन सी कीज होती है, विच आर स्पेशल कीज ऑन दैट, कौन सी की का क्या फंक्शन होता है. माउस में भी लेफ्ट बटन, राइट बटन, बीच का स्क्रोल बार, all that things na, just revise them once when you go for your exams. Which programming language was developed by Grace Hopper? COBOL. जल्दी से आंसर आया. COBOL. Very good. The first graphic web browser was web browser. मैम सी Netscape. It is Mosaic. 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 Then first commercially successful microcomputer was called IBM PC. IBM PC. देखते हैं आंसर. Altair 8800. 8800. ये हमने जब कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ी थी ना, उसमें लिखा हुआ है. अब देखिएगा पीछे जाकर के. The Unix operating system was developed at which place? Unix. You know this operating system Unix is not very user friendly, but Unix लोग पहले यूज किया करते थे before Windows. These days nowadays Linux is very much used. क्यों बता सकते हैं? Why do we use Linux instead of Microsoft Windows? Any try? Question is not there on the screen. I'm asking you. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आया DOS, फिर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए. लिनक्स, यूनिक्स आया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बहुत सारे वर्जन्स आए. देन केम आपका लिनक्स, LINUX. इट इज यूज्ड. व्हाई इट इज यूज्ड? क्योंकि उसमें ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, इट इज सेड कि उसमें इंटरनेट अगर यूज करते हैं तो वायरस अटैक कम होता है. फाइन. चलिए इसका आंसर बताएं. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड एट Labs. Bell Labs, you're saying? Okay, very correct. Bell Labs. The first computer virus was called. ये कल भी आया था. Creeper. Yes, this question was there yesterday also. Creeper. Now some questions on abbreviation. ठीक है? Yes. What does RAM stand for? Random access memory. Random access memory. Random access memory. I will not repeat the blue button. What is the shortcut for copy? Control C. Control plus C. अच्छा, Control X किसके लिए होता है? Cut. Cut. Control V किसके लिए होता है? Paste. Paste. Control P किसके लिए होता है? Print. Print. Very good. Control E करूँ तो? आगे क्वेश्चन है, पर ऐसे ही बता दो, जल्दी जल्दी बता रहे हो तो. Control E करके दिखाऊं? Erase. इरेज. Control E कर रही हूँ. देखिए मैं आपको दिखेगा नहीं, मैं Control E प्रेस कर रही हूँ. आई एम प्रेसिंग माई Control E बटन. क्या हुआ? लाइन मैम सेलेक्ट करने के लिए. नहीं, क्या हुआ अभी मैंने किया आपके सामने. एक मिनट में अंडू कर रही हूँ. अच्छा, अंडू करने के लिए विच की? Control U. कंट्रोल Control Z. Control Z. यू मत करना, अदरवाइज वो अंडरलाइन हो जाएगा. Control Z कर रही हूँ, वापस से अपनी जगह पे क्या है. आई एम अगेन डूइंग Control E. क्या हुआ? मैम शिफ्ट मैम एडजस्ट हो गया. पेज का सेंटर अलाइंड. यस मैम. पेज का सेंटर अलाइंड इज Control E. गेटिंग इट? तो ये शॉर्टकट कीज यूज करते हैं उसके लिए हम लोग. देन व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. Central Processing Unit. And which is the brain of a computer? CPU. CPU. The brain of a computer. ये हम लोग क्लास 1 के बच्चों को पूछते हैं स्कूल में.
What is the shortcut for undo in most application? अभी बताया आपने. Control Z. Control plus Control Z. Z. Control U is for underline. Control Z is for undo. Control A करेंगे तो क्या हो जाएगा? Select all. पूरा. देखिए Control A किया, पूरा सिलेक्ट हो गया. Escape की दबा साइड में क्लिक करूंगी, पूरा हट जाएगा. Control S करेंगे तो Save. सेव करेंगे. मतलब एक फाइल बन चुकी है. Again and again you have to save it. You can press Control S. Fine. And if I have to do my font italic, थोड़ा सा tilted होता है, उसके लिए क्या प्रेस करूंगी? Control I. Control I. If I have to bold my written word, Control B. Control B. B. Very good. So ये सब टिप्स पे होने चाहिए. जरूरी नहीं कि माउस से काम करे. कीबोर्ड वर्किंग इज वेरी इजी. What does HTML stand for? Hypertext. Hypertext markup language. Hypertext Markup Language. Correct. मैंने पहले ही पूछ लिया आपसे सेव है तो. What do you mean by GPU? GPU stands for General. Graphic processing unit. Graphics Come again? processing unit. Graphic processing unit. Graphics Graphic. Processing Unit. Yes. It is not general purpose unit. It is graphic. G stands for graphic in computer. Now cut का भी हो गया है. मैं नहीं पूछूंगी. What do you mean by URL? URL जो वेबसाइट लिंक करती है ऊपर. Resource. Uniform Resource Resource locator. Locator. Yes. पेस्ट के लिए पता ही है सभी को. कंट्रोल V होता है. राइट. हाँ चला गया. Yes. Now कुछ क्वेश्चन Microsoft Office से related. Which program in Microsoft Office is used for creating slideshow? PowerPoint. 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 Microsoft PowerPoint. Yes. And to run the PowerPoint slideshow, which key should I press? F5. F5. ये मैंने पहले भी बताया था. Good. Remember it. Which Microsoft Office program is primarily used for creating and editing text documents? Microsoft Word. 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 Very good. Then, which of the following is not a feature of Microsoft Excel? Not a feature of Microsoft Excel. मतलब Excel में जो- Data using formula. Pardon? Analyzing data. Analyzing data आप बोल रहे हैं. You know, analyzing data basically formulas के ऊपर अगर काम करना है तो ही Excel यूज किया जाता है. Excel जो ऐसी चीज है ना, which works particularly on complex formulas. Fine. वो चार्ट्स भी क्रिएट करता है, बार ग्राफ्स क्रिएट करता है, पूरा आपका जैसे आप टेंडर बनाते हो ना, उसका पूरा मॉड्यूलेशन करके आपको दे देता है. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है. नहीं करता है तो वो एडिटिंग क्रिएटिंग डेटाबेस का काम नहीं करता है. Then, which program in Microsoft Office is used for managing emails? Microsoft Outlook. Microsoft Outlook. Very good. Now, what is the extension for Microsoft Excel file? Option C. Option C. S. मतलब पहले Excel S हुआ करता था, अब XLS X एक additional दिया है. Which program in Microsoft Office is used for creating and managing databases? Microsoft Access. Microsoft Access. Very good. Which of the following is not a function of Microsoft PowerPoint? Not a function of Microsoft PowerPoint. Option D. Design brochures and flyers. Which No. one? Flyers wala. Designing brochures and flyers you're saying? Yes, ma'am. Okay. Let us check whether you're right. And you're absolutely right. It doesn't design, not used for brochures and flyers. Yes. Which program in Microsoft Office is used for creating and editing spreadsheet? MS. Microsoft Excel. Microsoft Excel. पहले you know Microsoft Excel से पहले ना एक Lotus 123 करके आता था सॉफ्टवेयर. Lotus 123 उसमें बिल्कुल कॉलम जैसे Excel में बने हुए हैं ना वैसे ही बने हुए आते थे, बट उसमें काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था. Then came Excel version which is very user friendly. Which of the following, 1 minute पढ़ने पा रही हूँ. Which of the following is a feature of Microsoft Word? Formatting text documents. Formatting text document. Yes, Document. formulas तो Excel में होता है, कैलकुलेशन भी Excel में होता है, स्लाइड शो PowerPoint में होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट Word में होता है. Now extension of PowerPoint, PPT. Option B. PT. option B, correct. And extension of Word file, DOC. हाँ, और दूसरा अभी नया वर्जन में
DocX. हाँ, DocX, correct. Which operating system is developed by Microsoft? Windows. It has to be Windows because हम कहते हैं ना Microsoft Windows. What is the latest version of Windows as of 2021? 11. 10. Windows 11. 11? Yes, ma'am. Ma'am, 10. Yes. Latest version is 11. But you know, working on 10 is much more easier than working on 11. Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा difficult हो जाता है Windows मैम 11. बहुत हैंग कर मतलब लैग करता है कंप्यूटर बहुत चलने में. हाँ, Windows 10 में जब आप काम करते हैं ना, बहुत ease के साथ में काम कर सकते हो on any of the Microsoft Office program. Yes, ma'am. Very good. My Windows 10. Then which Windows version? The Windows 95. start menu कब आया था? Sorry, ऊपर चला गया question मेरा. 1 minute. Which Windows version introduced the start menu? Windows 95 you said, and very good. Which component of Windows provide a graphical user interface? GUI कौन provide करता है? Which component of Windows? Command prompt, Windows Explorer, Task Manager, Control Panel. Ma'am, control panel. Yes. Windows Explorer है, sorry. Control पैनल में आपको जो सेटिंग्स करनी होती है, जैसे डिस्प्ले सेट करना है, आपके कोई हार्डवेयर डिवाइसेस है, कनेक्ट वॉल्यूम इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, जो भी हार्डवेयर आप कनेक्ट करते हो ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाती है. हियर इट इज विंडोज एक्सप्लोरर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए. Which file system is used by default in the modern Windows operating system? NTFS. NTFS, you're saying? Absolutely right. Which window features allow you to organize and manage running applications? Running application. Taskbar. Very good. Taskbar. अभी suppose I'm working on a file, है ना? अगर work करते करते I am hang on a file. मतलब मेरी फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो मैं कुछ की बटन दबाती हूँ कीबोर्ड के ऊपर, तो मुझे वो टास्क बार पे ले जाता है. कौन से वो 3 कॉम्बिनेशन है वर्ड कीज के, बताए? Alt delete. Yes, Control Alt plus Delete. When I press them together, it leads to a window which is called as a taskbar. जब taskbar open होता है, तो taskbar हमें दिखाता है कि how many programs are open, which are running and which is hang. वो पूरा information दिखाता है. You can scroll your mouse on that particular program जो आपको close करना है, highlight that, and you can just below it is written end task. आप end task करते हो तो वो particular program close हो जाता है. If it is creating a hurdle in your program, you can even close that particular program which is open at that particular point. तो ये task bar ये सब काम करने में ease देता है आपको. और अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं CPU में फिर? मतलब कंप्यूटर हैंग ही हो गया है, फिर क्या करते हैं हम लोग? वो बटन दबा देते रीस्टार्ट. कौन सा वाला? मेन वाला? स्टार्ट है नहीं मैम, वो नीचे छोटा सा बटन होता है. क्या बोलते हैं उसको? रीस्टार्ट नहीं, उसको रीसेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रीसेट. Reset button. Fine. It's a small button near your main button. That is called as a reset computer. मतलब reset करने के लिए काम आता है आपके कंप्यूटर को और वो वापस से starting mode पे चला जाता है. Which window features allow you to restore your system to a previous working state? System restore. Which one? 7 का C. 7 का C है. एक बार सोच लिया. Yes, ma'am. 7 का C, system restore button, correct. Which window utility allows you to uninstall software application? Device manager. Device manager. Device manager, it is control panel. जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंट्रोल पैनल में दिखाई देते हैं. आपके हार्डवेयर, आपके सॉफ्टवेयर, full listing is there in your control panel. मतलब it controls whatever things are there in your computer. Through that only you can access all the devices attached and you can control their working, whether you want them, you want to remove them, uninstall them. That work is done by the control panel. Which window features allow you to view and modify system settings and configurations? Control panel. Control panel. Control panel, exactly. Control panel. Now, which windows
feature allow you to compress files and folders to save disk space? File Explorer. File Explorer. Cleanup. Yes. Who said Disk that? cleanup. Disk cleanup? Deepika. Yes, very good दीपिका. डिस्क क्लीनअप, उससे क्या होता है जो अनवांटेड फाइल्स हैं वो हम लोग हटा देते हैं, है ना, और डिस्क और स्पेस उसमें क्रिएट हो जाती है, सेव डिस्क स्पेस. सो डिस्क क्लीनअप, करेक्ट. नहीं, ये तो हो गया था. सीन Yes, ma'am. सीन ना. Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो उतना करते, बाकी तो मैं आपको भेज ही देती हूँ, बाकी क्या आप खुद देख लीजिएगा. फाइन. सो पहली बात तो यहाँ ग्रामर की स्पेलिंग ही गलत है. यू ऑल अंडरस्टैंड ना व्हाट डज रेड लाइन मीन इन वर्ड? When there is an error in spelling. There is error in spelling. And what does blue line means? बताओ. स्पेस. स्पेस. अभी देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फुल स्टॉप डाल दिया, तो ब्लू लाइन हट गई प्रॉब्लम्स के सामने से. Yes, ma'am. ग्रामेटिकली चेक करता है वो, है ना. एंड रेड लाइट, आप रेड लाइन जो आती है वो आपको इंडिकेट करता है कि योर स्पेलिंग इज रॉन्ग. अब यहाँ पे देखिए, व्हाई देयर इज अ ब्लू लाइन हियर? फुल स्टॉप. नहीं, कुछ और भी तो हो सकता है. मैम स्मॉल टी होगा. Ma'am, यस, स्मॉल टी होगा. फिर भी आया, अब क्या आएगा? Full stop. ए कैपिटल हो गया, समझ रहे हैं. सो लाइक हाँ. दिस टू चेक आवर डॉक्यूमेंट ग्रामेटिकली. वो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ गलत हुआ है. सम इट इज नॉट ऑलवेज राइट, बिकॉज हियर आई वांटेड टू स्पेसिफाई एज ए कैपिटल हियर. अगर मैं उसको छोटा करूंगी तो अलग होगा. सो वी हैव टू जस्ट टू ब्रिंग आवर अटेंशन टू द वर्क. It underlines certain things. The spelling and grammar tool used for, what is it used for? all of All them. of above. All of. Which is not included in a font style. Superscript. Regular. Font style में regular आता है. Superscript. सुपरस्क्रिप्ट एंड एक और स्क्रिप्ट कौन सी होती है सुपरस्क्रिप्ट के अलावा? सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आपके सामने कर रही हूँ. Use about letters और numbers symbol सबको वो करते जैसे हैं. मैंने ये लिखा टू लिखा है, ठीक है. नाउ इफ आई डू दिस, इफ आई टेक दिस टू, इसको नीचे ले जाती हूँ और ये है आ गया मेरा, ये रहा सुपरस्क्रिप्ट. ये लिखा हुआ आता है. एक मिनट, ये हाईलाइट करना पड़ेगा. ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ आया, तो ये पावर पे चला गया. अगर बेस में डालना है मुझे, इसको अंडू कर दिया मैंने. इफ आई वांट टू ब्रिंग इट टू द बेस, आई विल गिव डू सबस्क्रिप्ट. It will take the base part. Did you understand? There are two things, subscript and the superscript. Superscript ऊपर चढ़ाता है पावर को, subscript उसके बेस पे लेकर के आता है, right? Then define landscape. Print के दो orientation होते हैं. Which are two orientation of prints? Page orientation. हाँ, page orientation. How? Well, how do you define your print orientation of pages? दो तरह से होते हैं ये. Ma'am, landscape and portrait. वेरी गुड. लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट मतलब खड़ा हुआ हिस्सा, लैंडस्केप मतलब आपका पेपर जो ऐसा स्टैंडिंग है वो स्लीपिंग मोड में आता है. दैट इज अ लैंडस्केप मोड. देन विच इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड? डिफॉल्ट जैसे हम खोलते हैं, डिफॉल्ट अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो विच इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन? Portrait. इट इज ऑलवेज पोर्ट्रेट. लैंडस्केप तभी होता है जब हम फिजिकली जाके वहां पे चेंज करते हैं, देन ओनली इट टेक्स लैंडस्केप. Select from the following is not available on the ruler of MS Word screen. Center indent.
Is it? फिर से पढ़ो क्वेश्चन को. tab stop box. It is सेंटर इंडेंट ही है. जरा सा डरा दो, डर जाते हो आप लोग. चलिए रिमूविंग दो. अच्छा टाइम तो हो ही गया है. नो प्रॉब्लम. मैं ये भेजूंगी because it contains lot of question word से related. Many questions are there in this file which will help you. Similarly, you can get other type of questions in your Google also. आप लोग ढूंढिएगा. From my side, all the very best to all of you. है ना? May all of you secure good marks. And I will be very happy if you all get through all your examinations. So take care of your health also. Right? I'll stop this screen. Yeah. Take care of your health and all the very best for your examinations. All of you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Thank you ma'am. so much, God ma'am. bless you all. So I'll take your leave. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Bye. I'll send you Bye. all the points, whatever we have discussed today. Okay, ma'am. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Take Bye. care, Bye. everybody.